Hello students, today we are going to take further our discussion on the controlling chapter by discussing the process of controlling. These are the steps that are taken up in the process of controlling, wherein the first one is the standards establishment, because we know that controlling is all about checking that whether we have performed up to the mark or not. It is about analyzing the deviations that are there. So the first thing that we need to do is we need to set up some standards which we want to achieve. We need to set up the goals that we want to attain. Now, when the standards are being established, we have to establish the qualitative as well as the quantitative standards. The quantitative standards would be, say, if I want to uh, uh, produce a particular object, produce a particular thing within a certain cost. So that they will be my cost standards. There can be the standards related to the defects per batch, that if I want that in my organization, when a production cycle is going on, there should not be more than 10 defects per cycle. Then this is again a quantitative standard that I am setting up. There can be standards for the revenue. There can be standards related to the time within which the work needs to be finished. All these are the quantitative standards that we can fix up. Similarly, there are qualitative standards. Uh, for example, the motivation and morale of my employees, the way my employees are going to work, the kind of interpersonal relationships that I want to have in my organization, these will be the qualitative standards. Wherever possible, we have to convert them into the quantitative form, because then only the controlling part becomes, you can say, more robust, and you can check it easily if it is in quantitative terms. So when we are having qualitative things, we try to turn them also into the quantitative measures. Say for example, if I set up a standard related to the communication pattern, and I say that I want to have good communication in my organization. I want that there should be open communication in my organization. Now, how do I measure it, or how do I check that whether I'm able to achieve that goal or not? There can be various quantitative methods. For example, you can have regular meetings with the employees. You can have a regular get along thing with your employees or amongst the employees, wherein there is a session wherein they can meet up, they can say whatever they want to, they can put in front of others that what kind of experience they have had. If they have come up with any innovative idea, that they can discuss with their office colleagues or with their boss. All these things can be converted into quantitative terms, that how you are helping to achieve that communication standard. But the standards that are being established have to be for the quantitative things as well as the qualitative things. Then the next step that is there is the measurement of performance. So once the performance has started, once the performance has taken place, actually the things have been done, then you have to measure it. Then only we can check it out. Then only we can go to the third step, wherein we will be comparing. What are we going to compare? The things that are listed in the first step and the things that we have measured in the second step. So if I have some cost standards that were laid down, wherein I said that per unit cost should not exceed 30 rupees, and then I measure the performance, that when actual production cycle has taken place, then what is the cost that is coming out of per unit? Is it within that range, or is it exceeding it, or is it less than what the standards were maintained? So for comparing the performance with standards, the first thing that is important is that you should have a standard related to that particular thing, and then you measure the performance for that. Once the comparison has been done, what we'll find out is we will find out the deviations. We will get to know that if there are any deviations or not. In case there are no deviations, it is within the given range. The important thing, why I'm using the word range again and again, because you never fix up a particular point. You do not say that the cost should not exceed 30 rupees. We generally say that the cost should range between 28 to 30 rupees, or it should range between 29 to 31 rupees or 32 rupees, whatever range you are deciding. So we have to see, when you measure the actual performance, that your performance is within that range. If it is within that range, we say there is no deviation. But if it is outside that range, whether it is on the left side or the right side of the range, that we will call as deviation, and both the deviations are to be studied.
Say again, if we continue with the example of cost, if we have set up a standard that our cost of per unit should range between rupees 28 to 30. When we find out the actual measurement of our performance, we see that the cost is coming out at rupees 33 per unit. That means we are going over and above what we estimated as our cost or what we have set up as the standard of our cost. So we need to see that where we can cut out the cost, where did we went wrong. This is obvious, this everyone knows कि हमें cost इतनी चाहिए थी लेकिन उससे ज़्यादा cost आ रही है तो हमें check करना पड़ेगा. What would be the case if the range was 28 to 30 rupees but your actual performance comes out to say 25 rupees per unit? It is a good thing. आपने तो सेटअप किया था कि 28 से 30 रुपए में आपका मैन्युफैक्चर होना चाहिए, वो 25 रुपीज में 25 रुपए में ही मैन्युफैक्चर हो गया, which is a good thing that you have achieved. But our technique says that we have to study, we have to analyze this deviation also, because it might be possible that your standard set were wrong. The technique of setting up the standard was wrong, and as we discussed earlier that controlling is a forward looking process. तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर deviation lower side पर भी आ रहा है, which is good for the organization, but why is it coming? Was it that because you were very efficient in production, which will be a good thing, but if it shows that maybe आपने standard ही गलत set किया था, आपको standard की जो range है वो actual में 24 to 26 rupees ही होनी चाहिए थी, आपने higher end पे उसको set किया, that is why you are able to achieve this 25 rupees. So that has to be analyzed. Then the last is taking of corrective actions. So if any kind of deviations are there, you will have to take the corrective actions, which can be maybe the standards are to be revised, the tasks that have been assigned have to be changed, your employees might be requiring some training due to which they can improve their efficiency. There can be improve in the techniques that have been applied for undertaking that particular task. So there can be n number of corrective actions that can be possible. It has to be seen कि कहाँ पर corrective action लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है. We'll move to our next slide, which is about the essentials of effective control system, and therein there are certain parameters which tell you that you cannot control each and everything, and as a manager you are not even expected to control each and everything. So what is it that we have to control, what is it that we have to look into, that we'll see over here. So if you want to have an effective control system, the first thing is that the emphasis should be on objectives. आपके standards क्या हैं, आप achieve क्या करना चाहते हो, आपका goal क्या है, वो बहुत clear होना चाहिए. It should always be forward looking. You do not have to keep on cribbing about the past. You do not have to keep on thinking कि क्या गलत हो गया, क्यों नहीं हम अचीव कर पाए, उसको आपको एनालाइज करना है, लेकिन वहां से अल्टीमेटली करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन. You have to see that how moving forth from here we can avoid these deviations, how moving forth from here we can avoid the mistakes that were done in the past. So it has to be forward looking, it has to focus on the future. The control system has to be prompt. What does it mean? That if today you are finding the deviation, if today you have come to know that there was something wrong which went into the process, you should immediately try to correct it. You should not keep on waiting. Controlling, this is one of the major principles of controlling, that the action that is being taken should be prompt. अगर आज कोई deviation हुई है और आज से 6 महीने बाद आप employees को कहो कि अरे वो 6 महीने पहले तुमने वो जो काम किया था वो गलत किया था, तो उसका उतना impact नहीं होगा. Why? Because even that employee would not remember कि उसने 6 महीने पहले क्या किया था, क्यों किया था, what were the circumstances due to which he performed in that manner. और आप जब उसको फीडबैक 6 महीने बाद दे रहे हो तो आपके पास से भी कुछ पॉइंट स्लिप आउट हो सकते हैं. सो इट हैज टू बी प्रॉम्प्ट so that the deviations can be quickly managed and the corrective actions can be easily taken up. Then is critical control point, which I was talking about, that you have to identify the key areas of your organization. You have to identify the KRAs, which is the key result areas, कि कौन से ऐसे points हैं जिनसे actual में हमारे organization की performance में फर्क पड़ता है या हमारे organization की efficiency में फर्क पड़ता है. उन्हीं points को आपको control करना है.
अगर आप हर चीज को, हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अगर आप हर एक्टिविटी के को की एरिया बना दोगे, तो आपका जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, right? And if you see, one of the points of effective control system is that it should be economical. वो economical कब होगा? जब आप सिर्फ key result areas पे focus कर रहे हो, so that the benefits that you derive out of controlling are more than the cost that you are incurring on the controlling part. Then the next is control by exception. यहाँ पर जो हमने रेंज की बात करी, we will talk about the same thing over here कि आपके एक तो हो गए की रिजल्ट एरिया कि किस एक्टिविटी को कंट्रोल करना है और नहीं करना है. फिर विद इन दैट एक्टिविटी when is the time that you have to control and when is the time that you have to let go. This will be possible only when you are having a range of standards. You know, some deviations might be okay. तो अगर मैं कॉस्ट को 30 रुपीज पे फिक्स करती हूँ और वो 29 रुपीज आ रहा होगा या 29 रुपीज 50 पैसे आ रहा होगा, तो वो भी डेविएशन है. लेकिन अगर मैं उस रेंज को 29 रुपीज टू 31 रुपीज या 28 रुपीज टू 30 रुपीज या 28 रुपीज टू 32 रुपीज सेट कर देती हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ, इस रेंज में कहीं पर भी मेरी कॉस्ट वेरी कर सकती है. दिस कम्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, दिस कम्स फ्रॉम द पास्ट डेटा, this comes from the things that you are the production data that you are having from the past. वहां से आप एक रेंज एस्टैब्लिश करते हो. अब आपको पता है कि अगर इस रेंज में मेरी कॉस्ट कहीं भी आई, अगर मैंने रेंज 29 टू 31 रुपीज सेट किया है, अब वो 29 आए, 29.5 आए, 30 आए, 30.10 आए, 30.5 आए, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है. वहां मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. मुझे कब कंट्रोल करना है? जब वो उस रेंज से बाहर जाएगा. सो दिस वी कॉल एज क्रिटिकल डेविएशंस, कि जब आपने एक रेंज सेट कर दी थी, आपने उसको ऑलरेडी एक पैरामीटर दे दिया दैट विद इन दिस रेंज इट कैन मूव, विद इन दिस रेंज इट कैन फ्लक्चुएट, बट जब वो उससे भी बाहर जा रही है, देन इट माइट बी अ क्रिटिकल डेविएशन एंड द मैनेजर नीड्स टू गिव हिज और हर अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जितना ज्यादा जो मैनेजर हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली वो काम कर पाएंगे, बिकॉज देन ही और शी विल बी हैविंग ओनली सर्टेन पॉइंट्स वेयर दे हैव टू लुक इनटू, wherein they have to see that controlling is required or the corrective action is required. So it will be easier for them, they'll be able to give proper time, and it will be more efficient control. The next is that flexibility is to be there, because we are talking about the future conditions. You're talking about a business world which is working as an open system. So you have to be adaptable to the new developments. If there is no flexibility in the control system, then it might be possible that you are going out with the past things, with the past techniques. आप उसी तरह से कंट्रोलिंग करते जा रहे हो. अब वो एरिया की रिजल्ट एरिया ही नहीं रहा, या अब आपको स्टैंडर्ड्स चेंज करने की जरूरत है, रेंज चेंज करने की जरूरत है, आपने नहीं की, बिकॉज योर कंट्रोलिंग प्लान इज नॉट फ्लेक्सिबल, एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका कंट्रोलिंग विल फेल. देन द स्टैंडर्ड्स हैव टू बी ऑब्जेक्टिव. जितना ज्यादा हो सके, जब हमने सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात कही तब भी कहा, जितना ज्यादा हो सके हमें क्वांटिफाइड डेटा में ही अपने स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए, ताकि आप उनको इजीली वेरीफाई कर सको, उनको इजीली मेजर कर सको, और आप उनको आपस में मेजर करने के बाद आप उनको आपस में कंपेयर कर सको. Economical, I have already talked to you about this. Then is motivating. Again, in the last class we discussed about this, that when you are controlling, you have to control the actions and not the workers. You have to correct the way of working of that employee. आपको ये नहीं सोचना है कि हमें इस person को change करना है, इस person में कुछ खराबी है. We have to see that why did that person did a wrong thing, or why this person could not achieve the target, what was the wrong way of working. So the attention has to be on the way of working of that person and not the person himself or herself. जितना ज़्यादा हो सके, you try to imbibe it in your employees that they have to have self control. जब हम खुद को सेल्फ कंट्रोल करते हैं, जब हमें पता होता है कि हमें अपने एक्शंस का ध्यान खुद से रखना है, दैट इज मोटिवेटिंग एंड वी आर मोर एफिशिएंट व्हाइल डूइंग दैट पर्टिकुलर कंट्रोल पार्ट. हम कहते हैं ना, अगर खुद से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे काम करना है, या अगर मुझे खुद से पता लग जाएगा कहाँ पर मुझे अपने एक्शन को करेक्ट आउट करना है, इट विल बी ईजियर
and I'll be more efficient in my work rather than somebody from outside telling me कि ये तुम गलत कर रहे हो और ऐसे नहीं करना है. Then it has to be suggestive and simple. Simple हम क्यों कहते हैं? So that everybody can understand it. जब आप एक कंट्रोलिंग की टेक्निक लगा रहे हो या आप एक कंट्रोलिंग मॉडल लगा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत जरूरी है कि मैनेजर के साथ साथ सभी एम्प्लॉयज को भी समझ में आए कि आप करना क्या चाहते हो. अगर आप अभी हम आगे टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल करेंगे, तो से फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग इन फॉर बजटरी कंट्रोल, हम कोई एक तरह का बजट बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जरूरी है कि वो एम्प्लॉयज को समझ आए कि हम वो बजट क्यों बना रहे हैं, उस बजट का पर्पस क्या है, वो बजट कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करेगा. देन ओनली दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड दे विल बी एबल टू एक्सरसाइज द सेल्फ कंट्रोल पार्ट. सजेस्टिव का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हो, कंट्रोलिंग में अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं स्टेप्स में, दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट हैव वी डेविएटेड फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड्स, and if yes, what corrective action is to be taken. So when this deviation has been found out, you cannot stop over there. You have to talk about the corrective action always, and this is a principle of feedback. Control system में हम basically एक feedback निकालने की कोशिश कर रहे हैं, right? We are trying to see कि कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ गलती हो सकती है, कैसे ठीक करना है. तो generally क्या होता है कि बहुत बार आप रुक जाते हो इतना देख करके कि हाँ यहाँ डेविएशन हुई, ये टारगेट था और ये एज एन एम्प्लॉय आपने टारगेट अचीव नहीं किया. यहीं पर अगर आप स्टॉप कर देते हो, देन योर कंट्रोलिंग प्रोसेस हैज फेल्ड. कंट्रोलिंग प्रोसेस का काम है कि पहले ये पता लगाना कि डेविएशन कहाँ हुई, फिर पता लगाना कि क्यों हुई, और फिर सजेशन देना कि आगे के लिए हम उसे कैसे रोक सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस. So as a having a good control system would mean that you must think about the corrective action that is to be taken, so that ये जितने deviations हुए हैं, they are undesirable deviations, वो आगे ना हो. आगे जब next time हो तो आपका जो objectives हैं वो आराम से आप attain कर सको. So these are all the parameters, features that you should have in your control system in order for it to be an effective control system. The last topic that we are going to discuss today is the accountability for performance. So we'll try to see what is accountability and what are the prerequisites if you want that a person should be accountable for his or her performance. Accountability हमने पहले भी डिस्कस किया जब हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के टॉपिक्स डिस्कस किए थे. सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल. Taking responsibility for your actions is your accountability. So if I am doing a work, if I have been given a task, if I have been given a responsibility, then completing that task, whatever results are achieved in that task, uska responsibility is mine. I am accountable for my performance. I am accountable, I am responsible, I am answerable for what I have achieved or what I could not achieve. Right? Now, when you are answerable, how is it possible for a person to be answerable? What are the prerequisites that must be there so that you can hold a person accountable? अगर मैंने कुछ काम किया है, आपने मुझे कुछ काम दिया था, मैंने वो वर्क पूरा किया, एंड यू वांट टू होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर इट, कि निधि आप अकाउंटेबल हो इस काम के लिए, आप आंसरेबल हो इस काम के लिए, तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो प्री रिक्विजिट्स के पॉइंट मेंशन्ड है, 7 पॉइंट्स, ये सातों अवेलेबल होने चाहिए, ये सातों ऑलरेडी होने चाहिए. क्या है? क्लैरिटी ऑफ गोल एंड एक्सपेक्टेशंस. आप मुझे अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हो किसी काम के लिए, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि क्या मुझे ये क्लियर था कि मुझे करना क्या है. जब आपने मुझे काम दिया था तो क्या आपने क्लियरली मुझे मेरा गोल बता दिया था? क्या आपने मुझे ये बता दिया था कि मुझसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? तभी आप मुझे अकाउंटेबल होल्ड करोगे. ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो आपने स्टैंडर्ड्स बताए थे वो ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड थे. आपने मुझे सिर्फ इतना कह दिया, से फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कल एक इवेंट है और आप इवेंट की तैयारी अच्छे से करना. अब अच्छे से इज नॉट अ पैरामीटर, इट्स नॉट अ क्वांटिफाइबल टर्म. आपने कहा अच्छे से करना, मैंने अच्छे से कर दिया अपनी तरह से,
बट क्या आपने डिफाइन किया था इस अच्छे से का मतलब क्या है? अगर आपने डिफाइन नहीं किया था, कल जब आप आओगे और तैयारी देखोगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी, वो एक्सपेक्टेशंस आपने मुझे क्लियर ही नहीं करी, आपने ऑब्जेक्टिवली स्टैंडर्ड्स ही नहीं ले डाउन करे, मैंने अपनी तरफ से तैयारी कर दी, आपको पसंद नहीं आई क्योंकि आपके माइंड में कुछ और था. But when will you hold me accountable, or when is it feasible, or when it should happen that you hold me accountable? If the standards were objectively laid down, if the goals and expectations were clear to the person who has been given the task. That person should be aware of the consequences. आपको employee को बताना चाहिए कि अगर आप perform करोगे तो क्या होगा, नहीं perform करोगे तो क्या होगा. So if I know that if I do not perform well in this task, I might not get my promotion. If I do not perform well in this task, I might not get my perks, right? Or if I perform well, then I might get some extra bonus. Or if I do well, I might get promotion. Whichever way it is, you must tell your employees about the consequences of doing or not doing that particular task. Your employees should have enough training of performing that task. They should have those skills to perform that task जो आप उनसे expect कर रहे हो. Feedback on performance should be given. ठीक है, बहुत जरूरी है. अगर आप किसी को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहते हो, आपने उनसे पास्ट में जो काम करवाया, क्या उसके लिए आपने उनको फीडबैक दिया? क्या आपने उनसे बताया कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर था? वर दे एबल टू अचीव इट और नॉट? से फॉर एग्जाम्पल, I take feedback of my classes from my students. So what is that? When I take that feedback, why I am taking it? So that I can be accountable for my performance. If today my students tell me कि आपसे मैम ये expected था classes में, आपने नहीं किया, this was the weakness or this was the lacking point, it becomes my responsibility to change over and be good in that aspect as well. अगर मुझे फीडबैक ही नहीं पता, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं काम कैसा कर रही हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव योर एम्प्लॉइज द फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस so that you can hold them accountable in future as well. Acceptance of responsibility is the last thing. कोई एम्प्लॉय ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करी है, जनरली कब नहीं एक्सेप्ट करेंगे? कि उनको पता है हमारे पास वो स्किल्स ही नहीं है कि हम ये काम कर सकें, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है प्रॉपर कि मैं अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर पाऊंगी, तो मैं अपनी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ही नहीं हूँ, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही एक्सेप्ट नहीं करती हूँ. तो अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्सेप्ट नहीं करी, आई कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दी परफॉर्मेंस. जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तभी आप उसके लिए अकाउंटेबल भी होते हो. So all these are the prerequisites. If these prerequisites are met, then you can create an accountability for performance of your employees. And that brings us to the end of the class. Thank you.